Due to some technical reason, the recording was stopped. Again, I am continuing. We were discussing on irrational and हम लोग देख रहे थे कि pi is irrational and 22/7 is rational. Okay. तो वहाँ हम लोगों ने देखा the value of pi exactly is not equal to 22/7. The decimal expansion of 22/7 is what? The decimal expansion of 22/7 is 3.142857, 142,857 and dot 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 dot. Okay. And this can be written as 3.142857 recurring. So this is the decimal expansion is non-terminating but repeating, and this decimal expansion is non-terminating but not repeating. ये है non-terminating non-repeating और ये है non-terminating repeating. Means pi is not exactly equal to 22/7. बस हम लोग pi जो है 22/7 के सिमिलर है, उसका वैल्यू वैसा यूज करें. Done. So these all are irrational. These all are the discussion regarding irrational. Okay. Now we will discuss the fundamental properties of irrational. Four fundamental symbol we have: addition, subtraction, multiplication, division. In class 6 we had learned regarding the fundamental work for whole number. Here we will discuss regarding the fundamental work of irrational number. Okay. Now we will discuss the properties of irrational, and there are some properties. Irrational number. We will discuss the properties of irrational. First property, what we have, that is closure property. Closure property. In class 6, whatever the properties we have learned for the whole number, in class 7, whatever the properties we had learned for integers, and in class 8, whatever the properties we had learned for rational, and those all properties we will learn in class 9 for irrational. So out of those property, number one is closure property. Actually closure property of whole number क्या कहता था? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए. तो whenever you will go for addition, closure property says that the sum of two whole number must be a whole number. Similarly, the sum of two integers must be an integer. The sum of two rational must be a rational. लेकिन यहाँ कहता है the sum of two irrational may be rational or may not. Sorry, the sum of two irrational may be irrational or may not be irrational. मतलब बाकी सब के लिए जो हम लोगों ने देखा, addition of whole number satisfy the closure property. Addition of integers satisfy the closure property.
addition of rational satisfy the closure property, but addition of irrational doesn't satisfy the closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर, इंटीगर्स, रैशनल ये सब सेटिस्फाई करता था, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना तो एडिशन के केस में, ना तो सब्ट्रैक्शन के केस में, ना तो मल्टीप्लिकेशन के केस में, और ना ही डिवीजन के केस में। तो चलो हम लोग फर्स्ट केस लेके चलते हैं, फॉर एडिशन। चलो यहां हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी जहां हम लोग लिए लेट ए एंड बी आर टू इरेशनल नंबर। ए एंड बी क्या है? दो इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट फॉर एडिशन क्या बोलता है? तो फॉर एडिशन इट विल से द सम ऑफ टू इरेशनल, the sum of two irrational may be rational or irrational। मतलब कि वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन होल के लिए जब चल रहे थे तो द सम ऑफ टू होल नंबर मस्ट बी अ होल, द सम ऑफ टू इंटीगर्स मस्ट बी एन इंटीगर, द सम ऑफ टू रैशनल मस्ट बी अ रैशनल। लेकिन इरेशनल के लिए चलोगे तो वो रैशनल कर हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। मतलब यहां कहता है a प्लस बी इक्वल टू रैशनल और इरेशनल, कोई भी हो सकता है। सिमिलरली इफ यू विल गो थ्रू फोर सब्ट्रैक्शन, अच्छा इसका एग्जांपल भी चाहिए, चलो जस्ट गो थ्रू एन एग्जांपल। हियर वी हैव टेकन रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल, अनदर वन रूट अंडर 3 is also an irrational. Sum of these two, root 2 plus root 3, this is what? Is an irrational. यहां जब इस दोनों का सम फाइंड करोगे तो this is the answer, इससे ज्यादा नहीं होगा। Take another one example. First one is root 2, another one is minus root 2. Find the sum of these two. You will get what? Root under 2 minus root 2. You will get 0, and 0 is rational. Means you can see दो इरेशनल का सम इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ये दो का सम यही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक्चुअली हम लोग जो पहले क्लास में पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 मीन्स व्हाट? 2 टू द पावर हाफ प्लस 3 टू द पावर हाफ। ओके सर, सेम पावर है तो सेम पावर के केस में होल पावर होता है, सेम पावर के केस में होल पावर होता है, लेकिन कब? इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और इन द केस ऑफ डिवीजन। In the case of addition and in the case of subtraction, it will not do. जैसे हम बताए हैं या आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में, laws of exponents a to the power m into b to the power m. On that moment, we can write ab to the power m. A to the power m divide b to the power m. We can write a divide b whole power m. लेकिन a to the power m plus b to the power m is not equal to a plus b whole power m. ऐसा नहीं होता। एंड सिमिलरली अगर माइनस भी लेंगे तो इट विल नॉट वर्क। ओके, अंडरस्टूड।
मीन्स अगर इस दो का मुझे सम चाहिए तो यही आंसर होगा. एनी डाउट? मतलब दिस इज ऑल्सो इरेशनल एंड दिस इज रैशनल. आप देख रहे हो, अगर कोई बोले डज द एडिशन ऑफ इरेशनल satisfy the closure property, you will say no. Similarly, just go for subtraction. Again we will write, here लिखे थे हम लोग the sum of, या लिखेंगे the difference of. मतलब a minus b, the difference of two irrational may be rational or irrational. आप लोग लिख लेना a minus b is not is equal to rational or irrational. And similarly we can take examples, some more examples. Okay, wait. For multiplication, a multiply b is equal to rational or irrational. Similarly, for division, a divide b equal to rational or irrational. Done. Means here for subtraction you will write the difference of two irrational may be rational or irrational, the product of two irrational, the division of two irrational. Means finally you have understood what you have understood. You have understood here the sum of the addition of irrational, the subtraction of irrational, the multiplication of irrational and the division of irrational doesn't satisfy the closure property. Okay. And next property we will learn commutative property. Write down. Okay, well, now we will discuss on the second property.
that is commutative. Property number second, commutative property says that the sum of two whole, commutative property for whole number says that the sum of two whole number in any way must be equal. The sum of two integers in any way must be equal. The sum, okay. Commutative property we had learned in our previous classes regarding whole number, regarding integers, regarding rationals, and here we will learn about irrationals. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा आप लोगों ने पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो होल नंबर के लिए रन करता है. अनदर वन प्रॉपर्टी वी हैव एसोसिएटिव एंड दैट विल लर्न फॉर थ्री नंबर. तो होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता था कि दो होल नंबर को आप कैसे भी ऐड करो वो इक्वल होगा. सिमिलरली इंटीगर और सिमिलरली रैशनल और सिमिलरली इरेशनल, मतलब रेस्ट ऑल जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है, मतलब कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, these all property will satisfy like as whole number, like as integers, like as rational. मतलब these all property will work for irrational like as rational, integers and whole number. ओके, मतलब जैसे उन लोग को सेटिस्फाई कर रहा था, जैसे वो सारे नंबर को सेटिस्फाई कर रहा था, वैसे ही इसको भी सेटिस्फाई करेगा. ओके, तो चलो let A and B are two irrational number. Number one, for addition. कहता था the sum of two whole number in any way must be equal. तो यहां बोलेगा the sum of two irrational in any way means A plus B लो और B plus A लो वो इक्वल होगा. नंबर सेकेंड, फॉर सब्ट्रैक्शन. एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं. फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बोलता था द डिफरेंस बिटवीन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू होल नंबर इन एनी वे मस्ट नॉट बी इक्वल. इंटीगर्स या रैशनल या इरेशनल वो इक्वल नहीं होगा. A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A. And similarly for multiplication, A multiply B satisfy will A multiply B must be equal to B multiply A. And for division, A divided by B must not be equal to B divided by A. Actually, the addition of whole number, the addition of integers, the addition of rationals satisfy the closure property. Similarly, the addition of irrational satisfy the commutative property. मतलब commutative property को एडिशन ऑफ होल नंबर, एडिशन ऑफ इंटीगर, एडिशन ऑफ रैशनल सेटिस्फाई करता था और ये भी सेटिस्फाई. हम अभी जस्ट बोल रहे थे रेस्ट ऑल प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड बाय इरेशनल नंबर लाइक एज रैशनल, इंटीगर्स एंड होल. ओके, सिमिलरली जस्ट गो फॉर सब्ट्रैक्शन. डज द सब्ट्रैक्शन ऑफ, एक्चुअली question is, does the subtraction of two whole number, does the subtraction of two integer, does the subtraction of two rational
satisfy the commutative property? No. The subtraction of two whole number, the subtraction of two integers, the subtraction of two rational does not satisfy the commutative property. So similarly, the subtraction of two irrational does not satisfy. And the multiplication of two irrational satisfy, and the division of two irrational does not satisfy. Like as this. Done. You can take the examples. Root under 2, root under 3. You will find root 2 plus root 3 must be equal to root 3 plus root 2. Okay. Take some, go through another one property. Number 3. Number 3 property is associative. Associative property will work for 3 numbers. Here, let A, B and C are 3 irrationals. A, B and C are 3 irrational numbers. Here for addition, like अब यहाँ भी जैसे कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा था, वहां बोल रहे थे द सम ऑफ 2 and here we will say the sum of 3. Means here we will write A plus B plus C must be equal to, for subtraction A minus B minus C must not be equal to, and for multiplication A multiply B multiply C must be equal to, and for divide A divide B divide C must not be equal to. Okay. Means commutative property and associative property satisfy करता है एडिशन को, satisfy करता है मल्टीप्लिकेशन को, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं करता है, चाहे वो रैशनल हो या तो वो इरेशनल. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव. नंबर 4. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके लिए है? तो फॉर मल्टीप्लिकेशन. और फॉर मल्टीप्लिकेशन में यहां here we will see 2 cases. एक है आपका ओवर एडिशन और दूसरा है आपका ओवर सब्ट्रैक्शन. फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन A multiply B plus C becomes A multiply C plus A multiply B plus C becomes A multiply B plus A multiply C, and similarly A multiply B minus C becomes A multiply B minus A multiply C. Okay, these all are the properties for irrational number. Some more property, negative of irrational will be irrational. Okay, and some more property that you can discuss and you can learn with the help of book whenever you will see inside the book. Done. Now, next point that we will have to learn in the chapter, the representation of irrational number on the number line. And that we will discuss in the next point. Actually, I am facing some problem right now. Sorry to say, light is off. That's why I am not able to teach you right now. If I will teach you, वीडियो क्लियर नहीं बनेगा, सीधा बात है. डन. थैंक यू. मीन्स
Next point we will discuss in the next video. Thank you.